अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लियोमायोमा, यूट्रस, फाइब्रोमायोमा और फाइब्रॉइड यूट्रस। अगर आपने गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक वार्ड में काम किया है तो आपको पता होगा कि 90% केसेस खासतौर पर इन गायनेकोलॉजी लियोमायोमा और फाइब्रॉइड कंप्लेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी गायनी रोटेशन में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसलिए हमने इसकी कुछ स्लाइड्स आपके सामने रखी हैं जिसमें हम स्टेप वाइज इसका इंट्रोडक्शन, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, इसका और ट्रीटमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली लियोमायोमा होता क्या है? लियोमायोमा एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस ट्यूमर है जो स्मूथ मसल का ट्यूमर है, जिसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक बेनाइन ट्यूमर बना देती हैं, लेकिन इस बेनाइन ट्यूमर के मलिग्नेंट बनने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए इसकी अर्ली मैनेजमेंट और डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो लियोमायोमास हैं आर द रीजन बिहाइंड 1/3 of the hospital admissions to gynecology services and one of the most commonest indication for hysterectomy. Hysterectomy एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। तो हिस्टेरेक्टमी में बहुत उसकी कॉमन इंडिकेशन जो है वो लियोमायोमा है। अब आपको पता है लियोमायोमा होता क्या है, और अब हम देखते हैं कि लियोमायोमा किन लोगों में ज़्यादा होता है, किन खवातीन में ज़्यादा होता है। लियोमायोमा बहुत कॉमन होता है नलीपैरस वुमेन में। नलीपैरस वुमेन, दोज वुमेन विच हैवंट प्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड, एंड ओबीस वुमेन, और ख़ास तौर पे वो जिनकी इसकी फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पे भी ट्यूमर है यूट्रस के अंदर तो उसमें बहुत कॉमन चांसेस हैं कि वो खातून या तो नलीपैरस हैं, या तो वो अबीस हैं, या उनकी फैमिली में पहले से किसी को ये ट्यूमर है। सो उसके अंदर हमें पता चलता है कि अब लियोमायोमा के आगे कुछ टाइप्स हैं। लियोमायोमा की 3 टाइप्स हैं, सबसीरस, इंट्राम्यूरल और सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ लियोमायोमा के बारे में। हिस्ट्री, मोस्ट लियोमायोमास आर एसिम्प्टोमेटिक एंड डायग्नोज्ड इंसिडेंटली, बट देयर कैन बी सम सिम्टम्स like bleeding, menorrhagia, menorrhagia, continuous irregular bleeding and blood-tinged vaginal discharge. They can be pressure symptoms like there is a sense of heaviness or pressure in your pelvic area. It can associated with urinary symptoms like urinary retention or urgency or frequency of micturition. It can also be associated with some GIT symptoms like dyspepsia or constipation. It can be associated with pain or dysmenorrhea, lower abdominal and pelvic pain. Not a common symptom, but may occur in case of fibroid polyp, torsion of pedicle of subserous pedunculated fibroid. लोअर एब्डोमिनल पेन एंड पेल्विक पेन सिर्फ मोस्ट कॉमनली तब होती है अगर उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन जो है वो फाइब्रॉइड के साथ एसोसिएटेड हो। हमने इसके बारे में बात कर चुके। अब हम बात करते हैं, उसमें पेशेंट आपको बाज़-औक़ात हिस्ट्री देते हैं इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री देते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, जैसे साइज इंक्रीज कर गया था यूट्रस का विद द रेटी जनरेशन। They can be the history of abortion and preterm labor and malpresentations. They can be history of some labor complication like inertia, dystocia, and postpartum hemorrhage. So, summing up the history, patient can be diagnosed as asymptomatic incidentally, or can be diagnosed by giving when she gives the history of bleeding, pressure symptoms, pain, infertility, or some specific pregnancy and labor complications. Now next we are studying the examination. When patient comes, first of all हम उसका GPE या journal physical examination करते हैं. When we see the pallor or anemia may be due to anemia, and anemia is associated with bleeding. And abdominal examination may reveal a firm, non-tender, round lobulated mass with side-to-side mobility which is dull to precocious. On PS examination, submucosal fibroid may be seen coming out of the cervix into vagina with ulceration of surface of mass seen as white discharge or bleeding.
On vaginal examination, there is a bimanual pelvic examination which reveals an enlarged, irregular, firm uterus, but it may be symmetrically enlarged in case of intramural or submucosal fibroid. Subserous fibroid may be felt attached to the uterus, or it may be felt as irregularity on one side or as an adnexal mass in case it is pedunculated or broad ligament fibroid. Submucosal fibroid polyp may be seen or felt coming out of the cervix into vagina. ओके सिंपली अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो वी सी पैलर ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, वी सी नॉन टेंडर lobulated mass on abdominal examination, we can see mass coming out of the cervix in case of PS examination, in case of PV examination or pervaginal examination we see irregular firm uterus or symmetrically enlarged uterus. Okay, now we will move toward the investigations. If above history and examination gives you enough clues about the diagnosis of fibroid, then to confirm our diagnosis, we will go for complete blood count, blood grouping, and RH factor, and urine routine and microscopy. Why we are going from urine complete examination? Because patient also has urinary retention and urinary urgency or micturition. So maybe it can be due to some urinary abnormality. So we are going to confirm it, and then we are going for an ultrasound and pap smear. Not necessarily important, but sometimes patient is advised endometrial biopsy when the diagnosis is in doubt. I will share another video about the medical and surgical treatment of fibroids. Till then, like and subscribe our channel. Thank you.